Good evening, everyone. Warm welcome to your own platform. We call it as MindnorM. First of all, very sorry to start the session late. Actually, there was a unavoidable situation because of which I have to delay this session. I'm really very sorry. But I hope now I am audible, I am visible, everything is fine, we are good to go. So give me a thumbs up if everything is fine so that we can begin with the discussion without any further delay. And as I promised, today we will be discussing many important news in a single session itself, where we will discuss the RBI circulars as well as the other news in this session, which is going to help you. Okay, so let's get started with the discussion. But before I start, एक बार जल्दी से give me a thumbs up in the comment section so that we can start, and do share the link of this session with your friends so that more and more students, they are aware that yes, the session is live now. There was some issue because of which we were not able to go live, but I guess now everything is fine. We are good to go, so we can easily begin with the discussion. ठीक है जी, start करें. Give me a thumbs up if everything is fine. Give me a thumbs up if everything is fine. Okay. सबसे पहले, before I start with the discussion, I have a very important information to share with you all, guys. That is, as we all know, the RBI notification dates have been announced, and you guys are quite uncomfortable with these dates, and you're feeling कि कैसे preparation होगी. So don't worry. I will be coming up. I would say me and Marisa, we will be coming up with many important sessions on the YouTube itself, which will help you to prepare really very well for your upcoming examination. ठीक है, आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है, that is really very important. लेकिन उस न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले first we'll have a quick discussion. उस पे आगे बढ़ने से पहले first we have a quick discussion regarding the news which we have discussed in the previous session, and I believe it will be a quick and good revision for everybody. After that, we'll move on to today's news, which is going to be really very important. ठीक है जी, let's start with the discussion. Okay, then let's go. So here we go with the first news of the evening. I would say the first question from the previous session. The question says, with reference to the recent ruling in the Tiger Global case by Supreme Court of India, consider the following statement. General anti-avoidance rule will not apply to investment made before 1st of April. That is correct. All restructuring of such investment. If you remember कि sir वहाँ पे बहुत clearly कहा गया कि जितनी भी investments हैं which have been done before GAR implementation, that is 1st of April 2017, on them GAR will not be applicable. But if there is any restructuring, done in that particular case, if there is any restructuring done, अगर मान लो आपकी जो investment का agreement है उसको आपने restructure किया, there has been some changes. In case of those changes, it will not be implemented. That means अगर आपका investment का जो agreement था, you have changed it, you have restructured it, then GAR can be applied even your investment was before 1st of April 17. The court distinguished between investment and arrangement. That is correct. Indirect ट्रांसफर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन? नो सर, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो भी है, इट कैन नॉट बी एग्जाम्प्टेड अंडर द DTA. दैट इज नॉट करेक्ट. द रूलिंग इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. क्या इससे जो अनसर्टेनिटी है अमंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स, विल इट इंक्रीज? टेल मी, विल इट इंक्रीज? हाँ सर, एक लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जिसने पहले इन्वेस्टमेंट की थी और वो ये सोच के बैठा था कि कुछ चेंज नहीं होगा, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 1st of April 2017 से पहले किया, आई एम नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ रिपल्केशंस एज पर द न्यू रूल्स. बट अब ऐसा नहीं है. इफ देयर इज एनी चेंज इन एग्रीमेंट, द थिंग्स विल चेंज. We moved on to the second news. In the second news, we talked about the NBFCs. If an NBFC wants to open up a new branch, they can even open up a new branch without RBI's prior approval. Without RBI's prior approval. In that particular case, if we have an NBFC, which is a deposit taking NBFC, in that particular case, if the net owned fund of the deposit taking NBFC is up to 50 crores and the credit rating is below AA, credit rating is below AA, then you can open up the branch in home state only. If your net owned fund is above 50 crores, below AA or above AA, then there will be the format on the basis of same. ठीक है. Point है कि sir, it has revised the earlier NBFC notification which was given, that says on 28th of November 2025, and if you want to open up a branch in
outside India, in that particular case, you will be applying through the Pravaha portal, and once the approval is given, then only you can do that. But overall, if I say the overseas branches, they are generally restricted. But if you want to open up, that can be done as a representative office, and in that case, prior approval of RBI is required. Uske basis pe we have a question. All NBFCs can open up branches in India without RBI approval unless specifically restricted. No, sir. It is not valid. All the NBFCs in the country, they are not allowed. All the NBFCs in the country, they are not allowed to open up. They are not allowed to open up the branches without RBI consent. They need RBI approval, then only they can open up the branches. So that is not correct. So keeping that in mind, this point will be wrong. Keeping that in mind, this point will be wrong. Moving on to the next part. What does the next statement says? Deposit taking NBFCs with net owned fund above 50 crores and credit rating below AA. They can open up the branches. Where they can open up the branches? Then my answer to this particular question, please pay attention. If the net owned fund is greater than 50 crores, but your credit rating is below AA, in that particular case, you can open up the branches only and only in home state. I repeat, you can open up the branches only and only in home state. In that particular case, it is not allowed. NBFCs, they are generally not permitted to open up branches abroad except certain grandfathered cases. So I would say generally NBFCs, they are not allowed. That is absolutely correct. Lekin, if you are planning to open up, I would say a branch which is going to be a representative office, in that particular case, you may be allowed. So keeping that in mind, the third statement will be correct. The next is prior RBI approval is required for opening representative offices abroad. Prior RBI approval, yes, we have just discussed. Yes, you can do that. That is required. These directions override all the existing laws applicable to NBFCs. All the existing laws, ये statement गलत है. This statement is wrong because these directions, they are in addition to the other laws. They are not overriding the other laws of NBFC. तो NBFC के ऊपर तो बहुत सारे laws है, तो सबको तो ये खत्म कर नहीं रहा. So keeping that in mind, answer will be what? Sir, in that particular case, answer will be third and fourth statements are correct. All NBFCs can open branches in India without RBI approval unless specifically restricted. हाँ, this is correct ना? This is correct. I read it wrong. मैंने ये पढ़ा कि all NBFCs, they cannot open branches without RBI approval. No sir, they can open the branches unless they are restricted. But यहाँ पे जो conditions हैं, these conditions are need to be fulfilled. And these conditions are basically for NBFC, which is deposit taking NBFCs and other cases. So keeping that in mind, A option is correct. That is 1, 3 and 4. Last news जो हमने last class में पढ़ी थी, that was related to SEBI. If you remember, SEBI as well as social stock exchange. If an entity, that is non-profit organization, get itself registered on a social stock exchange, there is a timeline. What is that timeline? So the timeline is that you have to raise the funds between 2 years. But if you are not doing that, then in that particular case, you won't be allowed further to exist on that particular exchange. But in this case, SEBI ने कहा नहीं sir, NPOs के लिए fundraising is very tough. So keeping that in mind, this has been extended. This means additional 1 year extension is given. Additional 1 year extension is given to the NPOs, that is non-profit organizations, so that they can raise the funds once they have registered over the social stock exchange. The next is flexible funding threshold. In that particular case, these FPOs, they can issue zero coupon, zero principal bonds. They are allowed to do that. But in this case, previous requirement was minimum subscription required was 75%. मतलब अगर आपने 100 करोड़ के bonds issue किए तो minimum subscription आनी चाहिए 75% की. But now it has been reduced to 50%. But in that case, you have to resubmit. You have to resubmit the entire proposal कि अब project कैसे run होगा, keeping in mind the funds have decreased. Now let's solve a question. Not-for-profit organization can now remain registered on SSE for up to 3 years without raising fund. That is correct. The minimum subscription for zero coupon, zero principal instrument has been reduced from 75 to 50%. This is correct.
Zero coupon, zero principal instruments provide fixed financial returns to the investors along with social impact. Fixed financial return, सर यहां से तो कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा है, तो डोनेशन है, पैसा दो, भूल जाओ जयराम जी की. There is that situation. NPOs must disclose the plan that how they are going to manage the shortfall if the shortfall is between 50 to 75%. 75 तक आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 से नीचे गया 50 मिनिमम रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर 75 से नीचे जाता तो भैया बताओ करोगे क्या? If the minimum subscription requirements are not met, funds are need to be refunded. That is correct. पैसा वापस करना होगा. This is correct. So answer to this particular question will be what? Sir, it will be A option. ठीक है जी. तीनों न्यूज कवर हो गई, तीनों न्यूज रिवाइज हो गई. If you have enjoyed the quick revision of the past three news which we have covered in the previous session, give me a thumbs up so that we can move ahead. Give me a thumbs up so that we can move ahead. चलो जी, अगली न्यूज पे बात करते हैं. अगली न्यूज शुरू हो रही है एक टर्म के साथ, एंड द नेम ऑफ दैट टर्म इज e-mandate. So what is this news? Sir, RBI has come up with a circular. It is called as Digital Payment E-Mandate Framework for 2026. First of all, the point is, so what do you understand by the word e-mandate? How you define this word e-mandate? E-mandate का मतलब क्या है? अगर आप में से कोई मुझे बताना चाहे what is e-mandate, and if you ask me, if I give you, so the answer to this particular question is e-mandate means approval given. E-mandate basically means approval given for recurring payments, approval given for recurring payments through auto debit option. Approval given for recurring payments through auto debit option. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर किसी ने मुझे बताया कि धुरंधर 2 मूवी बहुत जल्दी आने वाली है OTT पे, और उन्होंने मुझे बताया कि लेट्स सपोज दिस मूवी इज गोइंग टू कम ऑन नेटफ्लिक्स. आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. वैसे अगर मैं जीए का टीचर हूं तो मुझे सही बोलना चाहिए, तो सही आंसर है इट विल बी कमिंग ऑन हॉटस्टार एज पर द latest deal which has been done. So the moment I got to know that Dhurendra 2 is going to be released on Hotstar, I was very keen to watch that movie, and I basically thinking of purchasing the required subscription, the premium plan, whatever it is. So the moment I clicked on the buy now option, then they say that sir, you are looking for monthly or yearly plan. I said monthly plan. Then they asked me, so for this monthly plan, are you ready to go for auto debit? Are you ready to go for auto debit first? In some of the cases, these monthly payments are automated, or I would say they are mandatory under auto debit option. For example, if you are going to buy a premium plan for your Google account, then also it will go in the auto debit format. In case of Netflix, if I'm not wrong, it will also go for the auto debit format. You will not have an option कि भैया आप auto debit option के बिना उस subscription को monthly basis पे purchase ही नहीं कर सकते. That is not allowed. वो कहते हैं कि सर आप भूल जाओगे, 3-4 दिन फ्री में यूज करोगे, इंडिया है, फिर आप पैसे नहीं दोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स. वी कैन नॉट डू दैट. इफ यू वांट मंथली प्लान, वी आर रेडी टू गिव. विल चार्ज मंथली, बट द अमाउंट विल बी डेबिटेड on monthly basis. It will be an auto debit. Auto debit का मतलब, sir, auto debit का मतलब है there is no need to enter the PIN. Auto debit means there is no need to give the OTP. That means there is no authentication required. That means there is no authentication required. So that approval which is given by the customer to its service provider, to its bank, to its issuer. क्योंकि इसमें क्या है? For example, I would say Hotstar will receive the payment. Madhav will make the payment, but the platform through which the payment will be auto debited, that is the platform which is going to play the role. For example, in my case, it is PhonePe. I have registered on PhonePe through UPI, and now I am a UPI customer of PhonePe. So there was an option, make payment for Netflix through UPI. I made the payment. And the moment I made the payment, there was a condition that this payment can be accepted only if you click on auto debit option. I said, okay, de do. So in this case, PhonePe will become the mediator. Now, in mediators के, let's keep some names as per the technicalities कि इनके क्या नाम है in the technical world. In the technical world, the first is the term which we call it as
इशुअर एज वेल एज मर्चेंट। ये दो पॉइंट्स है जहां पे आप कंफ्यूज होंगे। एक पॉइंट है, एक टर्म है इशुअर। हु इज द इशुअर? सर इशुअर इज द बैंक which has issued you with the credit card, which has issued you with the debit card. That is the issuer. Issuer is your, I would say, phone pay, which has offered you the wallet. Issuer is your phone pay, which has offered you with the UPI services. So issuer is basically the issuer of. Issuer is basically the one who is issuing the instrument which you are using for making the automatic payment or the auto debit payments. Then you have a bank. Then you have a bank which allows you to pay the funds. Then we have a merchant. Merchant means the seller. Merchant means the seller who is giving you the services. Against those services, he or she is receiving the funds. For example, the business or the marketplace that receives the payments, that is basically known as merchant. A merchant के साथ there is one more term, and that term is known as payment aggregator. Payment aggregator. So payment aggregator defines a merchant as an entity or marketplace that sells goods, services or investment products including the exporters and overseas sellers. तो payment aggregator क्या होगा सर? अब मान लो एग्जाम नॉर्म है। अगर मैं आपको अब तो प्रैक्टिकल बात बताऊं, एग्जाम नॉर्म is your own platform. When you're purchasing a course at a very low price, which is available, the lowest price in the market, we are offering you with the courses. The moment you click on buy bundle, you'll click on the word buy bundle, a new window will open, and that new window is basically provided by our payment aggregator, that is Razorpay. The Razorpay is now responsible to receive funds from you. It is responsible to receive funds from the customer. Razorpay के पास पैसा आया, they will be settling those funds into our account maybe after 24 or 48 hours. अब क्या है कि सर वो जो वेबसाइट खोली, that is correct, Deepak, that website is the payment gateway, but the authority, the organization which is providing us the platform where n number of options are given to choose the payment medium, whether card, maybe UPI, maybe credit card, that entire service provider which collects the payment from the customer on the behalf of the merchant is known as the payment aggregator. So these are the terms which you need to remember. अब सर पॉइंट है कि ये सारी स्टोरी तो आपने बता दी, अब स्टोरी का क्रक्स बता दो कि कहानी है क्या। कहानी ये है कि सर पहले अगर मैं थोड़े पुराने जमाने की बात करूं, पुराने जमाने का मतलब इफ आई टॉक अबाउट 2020, पुराना ही हो गया सर ये जमाना, बहुत तेजी से द इकोनॉमी, द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. सो इन 2020 द थ्रेशोल्ड फॉर ई मैंडेट वाज 2000, उसे बढ़ाकर किया था 5000 कि अगर आपकी मंथली पेमेंट पर पेमेंट 5000 या उससे कम है, देन ओनली 5000 या उससे कम है, देन ओनली यू आर अलाउड टू गो फॉर ई मैंडेट. बिफोर 2020 इट वाज ओनली 2000. बिफोर 2020 इट वाज ओनली 2000. तो पहले ये 2000 हुआ, 2020 में इट वाज 2000, देन इन 2022 इट वाज, वन सेकेंड मैं गलत कर रहा हूं, लेट मी राइट द अमाउंट्स फर्स्ट. सो फर्स्ट मैंडेट जो ई मैंडेट अलाउड था दैट वाज 2000 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, then it was increased to 5000 rupees per transaction, and then it has been increased to 15000 per transaction. अब इसकी अगर हम बात करें 2020 की, अगर हम बात करें तो ये चीजें कैसे चेंज हुई है. सर चेंजेस ऐसे हुए कि सर 2020 में 2000 से फिर इसे 5000 कर दिया गया 2022 में, और अब जो लेटेस्ट मैंडेट है दैट इज व्हाट, दैट इज 15,000. दैट इज व्हाट 15,000. तो जो आपका 2026 का फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क इज नॉट सेइंग दैट दिस लिमिट विल बी 15,000. इट हैज बीन डन अर्लियर, दिस हैज बीन ऑलरेडी डन, this has been already done. But what this framework is which we are talking about, so this is basically consolidation. This is basically consolidation of all rules and regulations with respect to RBI which is related to e-mandates. तो उसमें पहली कंडीशन क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, सर व्हाट इज द लिमिट, सर द लिमिट इज 15,000. द लिमिट इज 15,000. अगली कंडीशन जो यहां पे आपसे पूछी जा सकती है इन योर एग्जामिनेशन, व्हाट वुड बी दैट? The next condition which could be asked from this particular topic related to e-mandate, वैसे तो मैं पूरी चीजें पढ़ाऊंगा लेकिन अब इसमें कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए. The type of e-mandate. Type of e-mandate का मतलब, सर we have two types of e-mandate. One is
fixed, other one is variable. Fixed means same amount every time, OTT. Variable means changing amount with maximum cap which is set by customer. For example, variable in the sense, sir, I have gone with the auto debit option, but in that case it's a variable payment where if I am making some extra purchase in that month, that variable amount will also be added in the regular payments, or that extra amount will be added in the regular payments. That is variable. अगला पॉइंट ये कहता है कि सर अगला पॉइंट ये कहता है कि if you want to enjoy this e-mandate, if you want to open up this e-mandate, if you want to introduce this e-mandate, then in that particular case up to 15,000 e-mandate is allowed. Up to 15,000 e-mandate is allowed. E-mandate is allowed without AFA. Without AFA. What is this AFA? Sir, AFA basically means what? AFA basically means what? Sir, it is additional factor authentication. Additional factor means OTP or maybe PIN based verification. So for the one time, your first time, if you are इंट्रोड्यूसिंग ई मैंडेट, अगर आप पहली बार आज आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदा तो आपको करना होगा द कंप्लीट, दैट इज एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन विल बी डन along with your password. You will be entering the OTP as well. But after that there is no required. After that there is no required of AFA. Without AFA you can go for the auto debit operations. But on the other side, if the recurring transaction is above 15,000, if the recurring transaction is greater than 15,000, in that particular case there is always an AFA. Even if you have done the auto debit option, yes, still if you have done the auto debit option, yes, still you have to enter the OTP at the time of payments, but it won't be applicable in case of insurance payments. It won't be applicable in case of SIP payments. It won't be applicable in case of credit bills. For them, this limit is not 15,000. This limit is up to 1 lakh. For those kind of transactions, this limit is up to what? So this limit is basically up to 1 lakh rupees where there is no AFA. I repeat, where there is no AFA. ठीक है जी. अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट ये है, इफ आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ऑन लेट्स से व्हाट इज द डेट 23rd of April, तो आज आपने क्या किया होगा सर? आज आपने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि जो आपका बेसिक पिन है वो दिया, प्लस उसके साथ साथ OTP दिया. आपने डबल वेरीफाई किया कि हाँ मैं ही माधव अरोड़ा हूं, ये अकाउंट मेरा ही है, ये तो ठीक है. लेकिन नेक्स्ट मंथ में ऑन 23rd of May, if the payment is up to 15,000 monthly payment, if it is up to 15,000, or I would say per payment value I'm talking about, if it is up to 15,000, then in that case no additional factor authentication is required. But उस केस में there are few conditions. First condition is pre-transaction. So you will get the notification of this debit beforehand. So it will be sent 24 hours. It will be sent 24 hours before the debit कि भैया कल इतने बजे या कल इस तारीख को आपका नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन it is going to over and I will be deducting 200 rupees for the next month's subscription. They are just informing you. On that amount will be written. What is going to be the amount? On that merchant name will be written. On that date as well as time will be written कि भैया ये transactions आपकी होने वाली है. After that, we have post transaction. Once the transaction is done, मतलब पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, अब क्या करें? In that particular case, अगर पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, तब क्या करें? सब मैंडेटरी कंफर्मेशन आफ्टर डेबिट. मैंडेटरी, you have to give a confirmation after debit कि yes, the amount has been debited from your account. This is mandatory. You cannot run away. As well as it includes grievance redressal details कि भैया अगर आपको इस ट्रांजेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इस ट्रांजेक्शन से कोई भी प्रॉब्लम है तो दिस इज द नंबर ऑन विच यू कैन कॉल. आपने देखा होगा जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, दे से इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और रजिस्टर योर कंप्लेंट सो एंड सो. ठीक है.
Now, in this case, customer has a control. Customer can modify, pause, or cancel the auto debit anytime. Customer can set even the validity period. Customer can even choose the notification mode, that whether I need a SMS or I need an email or I need both of them, everything will be done. अब अगर आप बैंक के पास जाते हैं और आप किसी भी issuer के पास जा रहे हैं, that issuer is offering you with e-mandate service. This e-mandate service is free of cost. It is free of cost. ऐसा नहीं कि PhonePe will say that I am making your bill payment every month, so I will charge 1 rupee per transaction. No sir, that is not there. It is free of cost. That is not there. It is free of cost. But these norms which we have just discussed, there is an exemption, and the exemption is for FASTag auto replenishment, as well as for the NCMC, that are the transport cards. We call it as National Common Mobility Card. For them, these conditions are not applicable, or these conditions are not applied. ये है पूरी कहानी, इसके बाहर कुछ नहीं है. इस कहानी की फोटो देख लो, बस इतनी ही न्यूज है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. मैं न्यूज का जो पूरे का पूरा आपके लिए ये AI जनरेटेड इमेज है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में इंफोग्राफिक्स कहा जाता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, विच आर इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद आई हैव अ डिटेल्ड नोट्स एज वेल, विच यू कैन रीड, विच यू कैन ऑब्वियसली रीड, so that you have the good knowledge of this entire topic. If a question is asked, maybe in the descriptive format, ये question तो descriptive में नहीं आएगा, but in a descriptive question, if you have to write anything, you can take up the data from this news itself. तो सबसे पहला, so one time, first time you have to do the registration, which is mandatory. Then we have factors of authentication, that is security checks used to confirm the identity. That could be OTP, PIN, or it could be passphrases, many things which are given. Transaction, the first transaction rule is you have to go with the additional factor authentication. You cannot say कि भैया मेरा पिन ले लो, काम खत्म करो. नहीं सर, पिन भी दो, OTP भी दो, दोनों चाहिए. उसके बाद these transactions, these e-mandates, they are not only for domestic recurring payments, it is also for the cross border recurring payments. Now you must be wondering, इंडिया में बैठ के कौन cross border recurring payments कर रहा है? But it has been seen by the RBI data that in the past 3 years, regular or recurring cross border payments are also there, so it is allowed for that as well. Then we have, sir, limit. 15,000 is the general limit. Recurring transaction up to 15,000 can be processed without additional authentication factor. Above it, you have to come up with that factor. But it is allowed up to 1 lakh in special cases. The special cases are, we have credit card bill payments, we have mutual fund subscription, that is the SIPs, we have the insurance premium payments up to 1 lakh without additional factor authentication can be done. अब कस्टमर को 24 घंटे पहले नोटिस मिलेगा that yes, this is done. Once the transaction is done, you will receive the approval, you will receive the message, and if you want, you can even cancel the payment because you have a time slot or you have a window of 24 hours payment होने में और payment का intimation आने में. And this service is a zero charges services which you can enjoy. Done हो गया? Clear हो गया? I took only, I guess, 15 or 10 or 15 minutes to complete the entire news. I hope it is clear. Give me yes sir so that I can move on. तो ये पूरी स्टोरी मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ कि सर ये फ्रेमवर्क 2026 का है. It is applicable on all the payment system providers and payment system participants which are conducting the transactions through cards, PPI or UPI. On them it will be applied, and it will be applied on domestic as well as cross-border transaction. Applicable to all kind of e-mandate because I have used 2 kind of e-mandate using my phone. मतलब through expense, can you please elaborate? Could you please elaborate? I'm not getting your point. So I have discussed what is authentication. That means confirming the customer identity. Then we have factors of authentication. Then we have issuer discussed, merchant discussed. That has been discussed. In case of registration, if you are going for an e-mandate, one-time registration process is need to be done. That will be done along with the additional factor authentication. The customer must also be able to choose how they want to receive
pre-transaction notification through SMS or email. Any later change in mandate or cancellation can be done, but that will be done again through AFA only. अगर आप cancel करना चाहते हैं, change करना चाहते हैं, then also it can be done. ठीक है जी? Is it clear? The next point is the first transaction under e-mandate must be authenticated with AFA. If the first transaction is taken at the same time as registration, then authentication may be combined with that registration step. The first transaction is taken at the time of registration, then the authentication may be combined with the registration step. That can also be done. Once the mandate is active, later recurring transaction may proceed under the framework limits as well as control which you have decided. एक जो डाउट आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं. डाउट ये है कि सर दो तरह के मैंडेट्स की बात हो रही है. ट्रू एक्सपेंस पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, सेकेंड वन यू डिस्कस्ड, एंड सेकेंड नो कॉस्ट EMI फॉर अ सब्सक्रिप्शन. नो कॉस्ट EMI फॉर अ सब्सक्रिप्शन. तो जो नो कॉस्ट EMI फॉर अ सब्सक्रिप्शन है वो क्या है सर? दैट इज बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग अ लोन and that particular loan you are enjoying on without any kind of interest. अब मैं आ रहा हूं सर. इसमें पॉइंट है कि ई मैंडेट क्या है. ई मैंडेट के साथ जो दूसरा वर्ड है ना, दैट इज ऑटो डेबिट. प्लीज पे अटेंशन. ई मैंडेट इज अ मेथड. आई रिपीट, ई मैंडेट इज बेसिकली अ मेथड. इट इज बेसिकली अ मेथड. ऑटो डेबिट इज अ प्रोसेस. ई मैंडेट इज अ मेथड. Auto debit is a process. What I'm trying to say, e-mandate is, I would say, if you want to go for it, e-mandate is a digital paperless authentication you give to your bank, and you allow recurring automatic deductions for the services like OTT subscription, or maybe for the EMIs up to 15,000. Auto debit is a broader term for automatic deduction which can occur via e-mandate. It can occur via UPI auto pay, or it can even occur through the NACH methods as well. But in that particular case, paper based physical signatures are need to be done. For example, अगर कोई बैठा ये सोच रहा होगा कि सर हमारे तो घर की EMI है, होम लोन है, वो 50,000 का, और मेरे फादर के अकाउंट से वो हर महीने कट जाता है, तो आप तो कह रहे हो 15,000 से ऊपर. भैया मैं कह रहा हूँ ई-मैंडेट, वो अप्रूवल ऑटो डेबिट का जो आपने घर बैठ के दिया, इलेक्ट्रॉनिकली दिया, पेपरलेस दिया. बट अगर आप बैंक में जाकर एक पेपर साइन करते हो, ऑटो डेबिट के पेपर पे फिजिकली साइन करते हो, देन दैट ऑटो डेबिट कैन बी ऑफ एन अमाउंट, जहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां पे कोई लिमिट ही नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? अब आई डोंट नो true expense what you are trying to say, but what I am understanding from your part is, वो जो आपने EMI बनवाई होगी, लोन की EMI, तो वो लोन की EMI जो आपकी ऑटो डेबिट हो रही है, वो ऑटो डेबिट इसलिए हो रही है कि अगर तो आपने डिजिटल लोन लिया, तो उस डिजिटल लोन के केस में आपका जो KYC हुआ होगा, that KYC would have been done with the help of a video call. So if it is done with the help of a video call, there is an involvement of authentication, much more authentication first. Second is maybe while signing those or while accepting the loan documents, you might have clicked on the option auto debit. So e-mandate is something where you are allowing your bank or your service provider for auto debiting the funds on regular basis, but that is done, or that approval is given through a paperless method. But अगर आप पेपर पे साइन करके दोगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो इसे कंक्लूड करें, फिर और ज्यादा तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है. तो यूजर के लिए ये सर्कुलर शेयर हो गया, ठीक है. मेजर फीचर्स ये आ गया, 24 आवर्स पहले बता दो. Customer must also be given a simple way to opt out of specific transaction or cancel the e-mandate, or opt out must be validated by AFA. आप जब चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन फास्टैग और NCMCs के लिए कोई प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन नहीं है. After the debit is completed,
then the information will be shared. Second alert is important because it helps the customer quickly identify unauthorized or mistakenly debit funds as well. Transaction limit. The framework keeps risk structure for transaction limit. Recurring transaction can be processed without AFA up to 15,000 per transaction. Transactions above 15,000, they require AFA if it is e-mandate. If it is physical mandate, then it's fine. A special higher threshold of 1 lakh rupees is allowed in case of insurance premium, क्योंकि पता है प्रीमियम आपके अकाउंट में जा रहा है. SIP पता है कि जिस अकाउंट से डेबिट हो रही है उसी इंडिविजुअल के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्रेडिट कार्ड जिसके नाम का है उसी नाम का हमारा अकाउंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे कहानी क्लियर हो गई. अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा. ये पूरी स्टोरी मैं आपको सुना चुका हूं. 2000 फिर 5000 और अब कितना कर दिया 15,000. तो 15,000 अभी नहीं हुआ, ये पहले से था, लेकिन अब 2026 में ये सारी कहानी को एक ही छत के नीचे आके लिख दिया आरबीआई ने कि दिस इज अ कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क फॉर ई मैंडेट. इसके अलावा जो पहले के सारे फ्रेमवर्क्स थे दे हैव बीन रिमूव्ड नाउ, बट एनी ऑब्लिगेशन, एनी राइट, एनी प्रोसीडिंग, एनी पेनल्टी, एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दी presiding act will be implemented. It will hold valid. तो जो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है दे विल होल्ड वैलिड, जो भी इश्यूज चल रहे हैं. लेकिन जो नए इश्यूज हैं, जो नया जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी अप्रूवल्स होंगे, दैट विल बी डन एज पर द न्यूली डिस्कस्ड ई मैंडेट. क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन सॉल्व करें. लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि सर विद रेफरेंस टू ई मैंडेट फ्रेमवर्क रेगुलेटेड बाय आरबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ई मैंडेट अलाउज ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट्स विदाउट requiring manual interventions each time. Correct. Registration of an e mandate require authentication using an additional factor. Right. Pre-transaction notification is mandatory for all types of e mandate without exception. No sir. Pre-transaction yes. Pre-transaction is yes. यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है. हाँ, अगर आप अपने एंड पे एज अ कस्टमर इफ यू वांट टू स्टॉप यू कैन डू दैट. एज अ कस्टमर इफ यू वांट टू स्टॉप यू कैन डू दैट. इफ आई एम अ कस्टमर एंड इफ आई वांट टू डू दैट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस सर आई कैन स्टॉप इट. बट क्या ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाइड है? नहीं सर. फास्टैग के लिए दिस इज नॉट अप्लाइड. एनसीएमसीज के लिए इट इज नॉट अप्लाइड. सो प्री ट्रांजेक्शन मैंडेटरी वाला फीचर इज नॉट applied on FASTag as well as NCMC. Remember that there is an exception. Customers can modify or cancel an e-mandate anytime. Yes, sir. Recurring transaction above 15,000 will ask you to give the OTP every time. Yes, sir. So answer to this question is going to be A option. I hope the point is clear. I hope the point is clear. Clear हो गया जी सबको? Clear हो गया जी सबको? Is it good to go? Shall we move on to the next news? Shall we move on to the next news? Logic बड़ा simple है यार. Logic बड़ा simple है कि e-mandate is kind of a risky affair in order to allow auto debits. तो पहले 2000 था, but the moment public got more familiar with this technology, they are using more frequently these UPI payments, card payments. तो लगा कि यार अब 2000 से बात बन नहीं रही, लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा, 5000 कर दिया. अब कर दिया कि सर लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा, 15,000 कर दिया. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, तो फिर मैं अगर ऐसा पूछूं तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 5 lakh rupees डिपॉजिट अप टू 5 lakh rupees इज इंश्योर्ड इन केस ऑफ DICGC. उसका लॉजिक ये है, मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट्स their deposit balance is below 5 lakhs. तो मेजॉरिटी का पर्पस सॉल्व हो रहा था विद 5 lakhs. सिमिलरली 15,000 से मेजॉरिटी का पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि 15,000 कर दो. जब कल को ये ट्रांजेक्शन की एवरेज वैल्यू और बढ़ जाएगी तो इसे 20,000 कर देंगे, ये 30,000 हो जाएगा, इसको और बढ़ा देंगे. सो इट्स बेसिकली द लिमिट्स आर बेसिकली टेकन कीपिंग इन माइंड कि एक ऐसी एवरेज वैल्यू लो जिसमें मेजॉरिटी ट्रांजेक्शंस कवर हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ऋषभ ने पूछा था, नहीं, जिसने भी पूछा होगा, क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. 1 2 3 4 5 आई गेस डन. अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज है. सो सेबी ने एक MOU साइन किया विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव रेड दिस न्यूज. आई विल टेक 2 minutes टू रीड दिस न्यूज विद यू.
SEBI has signed MOU with Department of Telecommunication to enhance coordination in tackling cyber frauds and misuse of telecom resources in the security market. तो सेबी ने कहा कि एक MOU साइन किया अप्रैल 2026 में to strengthen its combat or strengthen its capacity to fight against cyber frauds and protect the integrity of the security market. The agreement reflects increasing coordination between financial and telecom regulators in addressing the technology-driven financial crimes. The MOU was signed by Sanjeev Sharma and Sandeep Pradhan, whole-time member of SEBI. ये नाम सिर्फ आपके reference के लिए to build a story. No one is going to ask you. So it came into effect from the immediate time of or date of signing. The key features of this collaboration is the use of डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विच इज डेवलप्ड बाय डॉट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से कीवर्ड क्या है इस न्यूज का, दैट इज डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. क्या है ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म? सर इट इज अ सिक्योर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिजाइन्ड टू एनेबल कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड. तो भैया इसका काम क्या है? ये एक सिक्योर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स कि यहां ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये कैसे करता है? सर इट पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन कर्बिंग द मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्स सच एज मोबाइल नंबर्स. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज आई परचेज्ड अ न्यू टेलीकॉम कनेक्शन और उस न्यू टेलीकॉम कनेक्शन से मैंने क्या किया, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी. Those who have visited the exam.norm platform, मैंने उन सबको SMS कर दिया. उसी 100 को मैंने WhatsApp भी कर दिया. उन्हीं 100 को मैं कॉल भी कर रहा हूं. तो यहां से ये जो टेलीकॉम का DIP है ये सर्च करेगा कि यार क्या हो रहा है, ये इतने सबको क्यों मैसेज, कितने फोन, कितने WhatsApp क्यों किए जा रहे हैं, व्हाट इज द इशू with relevant to this. So in that particular case वहां पे वो इस नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं and that number will be called as spam. Next time you will receive a call, you will get the message that it's a spam, don't pick it up. That is what it is. So mobile numbers, SMS, call services that are often exploited for fraud activities, especially in financial market. So under MOU, SEBI and DoT will regularly exchange data and intelligence related suspicious activities, जिसकी मदद से जो फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह के जो कॉल्स हैं वो ओवरकम किए जाए. सो मेजर टारगेट है फाइनेंशियल फ्रॉड्स विच इन्वॉल्व फिशिंग मैसेजेस. फिशिंग मैसेजेस का मतलब क्या होता है? यू रिसीव्ड अ मैसेज ऑन योर फोन, उसमें एक लिंक था, आपने उस लिंक पे क्लिक किया. द मोमेंट यू क्लिक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, योर एंटायर data from your mobile phone is transferred. Because it's a phishing, you are just given the access to that, I would say, server to access the data. तो वो है phishing message. Fake investment call, unauthorized trading alerts, they all are the part of same. So this is basically DIP. Easy news है, question solve करता है. DIP developed by SEBI to monitor suspicious trading activities. Is it developed by सेबी? क्या इसे सेबी ने डेवलप किया क्या? नहीं सर, अभी तो आपने बताया इट इज डेवलप्ड बाय DoT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नॉट बाय सेबी. अगर सेबी ने किया होता तो भैया फिर टाई अप करते ही क्यों? द MOU enables real time sharing of intelligence to prevent misuse of telecom resources in the financial fraud, specifically related to financial market. That is correct. The agreement primarily focuses on regulating telecom operators who are involved in securing trading activities. Primarily focusing on regulating telecom operators. Telecom operators नहीं सर, उससे तो लेना देना ही नहीं है. MOU facilitates regular data sharing. This is correct. MOU came into force after the approval. नहीं सर, जहां दो लोग मिले, सेबी और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वाले, साइन हुआ, जैसे साइन हुआ उसी दिन से वो अग्रीमेंट, उसी दिन से वो टाई अप क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया. तो आंसर क्या बनेगा? सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. ठीक है जी. अगली न्यूज पे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट न्यूज इज SEBI has also signed an MOU with FIU, that is Financial Intelligence Unit. If I talk about this Financial Intelligence Unit, I hope you all are very well aware of this term FIU. मैंने बहुत बार अलग अलग न्यूज में इस टर्म को आपके साथ कवर किया, बट एक बार क्विकली
मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस FIU इंडिया, व्हाट इट बेसिकली मीन्स। सर अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज इट, आई वुड से इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन under the Department of Revenue, Government of India, which collects financial intelligence about the offences under the money laundering, under the money laundering। तो जितने भी transactions हो रहे हैं, जितने भी transactions हो रहे हैं, financial transactions which are not fulfilling the compliances, which are not I would say fulfilling the desired processes, they will be recorded, they will be checked, they will be scrutinized under FIU, and the data is shared between SEBI, RBI, PFRDI or DI on regular basis with FIU in order to identify these kind of fraud cases। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गया ये पॉइंट। सो इफ आई टॉक अबाउट द न्यूज, तो न्यूज क्या कहती है वो समझते हैं जरा। सो द न्यूज बेसिकली सेज FIU is basically a central national agency which is responsible for receiving, processing, analyzing, as well as I would say sharing the information relating to the suspected financial transaction। ठीक है, अगर मैं FIU की बात करूं, सर इट इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज सेटअप नॉट रिसेंटली, इट वाज सेटअप बैक इन 2004। इट इज द सेंट्रल एजेंसी which is responsible for analyzing all the suspicious financial transaction. It is also responsible for coordination and strengthening efforts of national as well as international intelligence। So अब point पे आते हैं। SEBI has entered into an MOU with FIU India। तो मैंने सबके ब्रैकेट में इनकी शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए बिकॉज इन दी फर्दर न्यूज, अब जो भी न्यूज में कवरेज होगी उसमें मैं सीधी सीधी इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा। सो इट इज बेसिकली दिस अग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ ongoing effort to strengthen the coordination in implementing the Prevention of Money Laundering Act 2002 and its related rules। So ये जो MOU है, this MOU is basically came up with the motive of information exchange, which are internationally accepted standards followed by financial intelligence units। So MOU will incorporate Egmont principles। What are these Egmont principles? So Egmont is basically the principle of information exchange which are accepted at the international level। तो यहाँ पे जो information sharing है from SEBI to FIU, FIU to SEBI, that will be done on this particular format। एक पर्टिकुलर आप कह लो कोडिंग, एक पर्टिकुलर आप कह लो फ्लो, एक पर्टिकुलर आप कह लो फॉर्मेट जिसपे शेयरिंग होगी। सो द नेम इज Egmont, that is important। FIU, SEBI, that is it। So MOU came into effect from 15th of April 2026। The same day it was signed, same day it was implemented। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? Sharing of data and information between SEBI and FIU। The corporation will help in detecting suspicious transactions, prevent fraud in security market and improve overall markets integrity। For that particular purpose, this agreement is signed। इस बार agreement sign करने कोई और गया था, कहां से? FIU इंडिया से। लेकिन अगर हम बात करें सेबी से कौन आए? संदीप प्रधान। सुना नाम नहीं लग रहा? सुना नाम लग रहा होगा संदीप प्रधान, क्योंकि ये दोनों अग्रीमेंट्स एक ही दिन एक ही जगह पे साइन हुए थे। So that is the reason I have taken up both together। So it is the entire news। अब क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement regarding the MOU between SEBI and FIU India। MOU aligns with framework of Prevention of Money Laundering Act, strengthening regulatory oversight in the securities market। Absolutely correct। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? Egmont principles incorporated in MOU primarily deal with mandatory disclosure of banking transactions to central banks। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। Egmont क्या है सर? Egmont principle relate to secure information sharing among FIU। उसमें सिक्योर फॉर्मेट पे एक इंफॉर्मेशन शेयर होगी जिसमें इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट, फ्लो का फॉर्मेट, रिसीवल का फॉर्मेट, एवरीथिंग इज लास्ट मेंशन। सो दैट इज द रीजन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Third is FIU India functions under the Ministry of Finance and is responsible for receiving and analyzing suspicious transaction reports। This is correct। MOU creates legally binding enforcement mechanism allowing SEBI to directly prosecute offend। नहीं सर, SEBI बस अपना घर बचा ले, उतना बहुत है। SEBI will not catch the offenders for Prevention of Money Laundering Act। SEBI will only save itself। So this is wrong। अग्रीमेंट फैसिलिटेट स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक एक्सचेंज। हाँ जी सर, बिल्कुल स्ट्रक्चर और पीरियोडिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर होगी। दैट इज एगमॉन्ट प्रिंसिपल। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अरे डी क्यों होगा भाई? डेस्टिनेशन डी नहीं होगा, उसका रीजन है ना, सेबी ने ये टाई अप किया, लेकिन सेबी थोड़ी ना जाके ढूंढेगी
कि ये ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर है या नहीं, वो तो सिर्फ ये देखेगी कि मेरा घर बचा या नहीं, मेरा घर बचा या नहीं। सेबी ने अपना घर बचाना है, और जहां सेबी को लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमें एफआईयू से मिली है, ये अकाउंट अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर इस अकाउंट से डीमैट अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन आए, मना कर देना, बस अपने आप को बचा लो। और जो ऑलरेडी चल रहे हैं अकाउंट, उन पे एक्शन ले लो। एक्शन तो मतलब ये नहीं कि वो पीएमएलए के अंडर एक्शन लेगा, वो सिर्फ अपने कैपेसिटी के अंडर एक्शन लेगा। एंड द एक्शन व्हिच कैन बी टेकन बाय सेबी इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट ओनली। ठीक है जी, अगली न्यूज सुनो, लास्ट न्यूज है। अगली न्यूज कहती है, एक तरफ वी रीड इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट परफॉर्मिंग नेशन, world's 50% of the digital payments are performed in India alone, blah blah, many things are there, है ना। Unfortunately, the currency circulation has increased by 11.9%, most in 5 years. ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? So please pay attention. So there is a sharp increase in the currency circulation in India during the financial year 2025-26. It was recorded due to the factors like rural recovery, precautionary demand, informal sector dynamics. करेंसी सर्कुलेशन पढ़ना है, याद नहीं रखना, सिर्फ पढ़ना है। पर्पस सौरभ समझ नहीं आया? पर्पस ये है सौरभ, एफआईयू इंडिया और सेबी, आपको आदत हो गई है हर चीज को ना पहले बताओ सर, डेप्थ में जाके समझाओ, कहानी सुनाओ, ड्राइंग करो, कर देता हूं। सेबी के पास वी हैव स्टॉक ब्रोकर्स, और स्टॉक ब्रोकर के पास वी हैव द इन्वेस्टर्स। ठीक है, नाउ इन्वेस्टर्स दे आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू दिस स्टॉक ब्रोकर, एंड सेबी इज लुकिंग आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। Similarly, FIU is receiving the information from multiple organizations, even government, even banks, where it also identify different transactions which are happening in the country. अब अगर FIU को लगेगा कि कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, कि इसके पास ये पैसा कहां से आया, सेबी को लगेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन डाइजेस्ट नहीं हो रही है, पैसा कहां से आया। सेबी ने जो अपना इंटरनल प्रोसेस फॉलो करना है वो तो करेगा, आइडेंटिफिकेशन जो भी करना। FIU ने जो इंटरनल प्रोसेस फॉलो करना है वो तो करेगा, लेकिन बदले में दे ऑल आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, so that if the same account flashes in front of FIU, then they must be very cautious कि भैया इसको ध्यान से देखना, सेबी ने भी इसको रिपोर्ट किया है, कुछ तो गलत है। सेबी कहेगा सेम अकाउंट, इसको तो FIU ने भी रिपोर्ट किया है, कुछ गलत है। रिपोर्ट का मतलब है आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट का मतलब ये नहीं दैट यू आर गिल्टी, अभी सिर्फ आपको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, बट उस स्क्रूटनी लेवल पे भी इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड टू अवॉइड फ्रॉड्स। Information will be shared to avoid frauds. Ashish, sir, will there be a potential threat to data privacy to the general public in both the... No, कहाँ की data privacy? FIU इंडिया के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेने की कैपेसिटी है from your banks, और सेबी के पास पूरी कैपेसिटी है कि वो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट की ट्रांजैक्शंस है उसकी इंफॉर्मेशन किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से मांग सकती है। तो वहां आपकी डेटा प्राइवेसी है भी नहीं, वैसे भी वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी शेयर हो रही है, बस अब इंफॉर्मेशन इंटर शेयर होगी, और वो तब शेयर होगी जब वो इन्वेस्टर का कोई ना कोई लिंक निकलेगा विद द कैपिटल मार्केट, तभी वो इंफॉर्मेशन सेबी के साथ शेयर होगी। लेकिन सेबी तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, क्योंकि एफआईयू के अंडर तो हर तरह की ट्रांजैक्शन आती है, सेबी के अंडर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? यस आरजू, दे आर मोर देन इनफ। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और वो चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। इसमें ये जो डेटा मैंने स्क्रीन पे दिया ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद करने मत बैठना। करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया, इट हैज इंक्रीज बाय 11.9% ऑन ईयर बेसिस टू अबाउट 41.68 ट्रिलियन, मेकिंग हाईएस्ट ग्रोथ सिंस फाइनेंशियल ईयर 2020-21। in absolute terms, if I say, the increase is 4.4 trillion rupees, मतलब 4.4 trillion का मतलब million 6 trillion billion 9 trillion 12, 4.4 into 10 to the power 12, तो ये हो गया 4,40,000 करोड़ रुपए की जो करेंसी सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट
existing country. Currency with public, which refers to the cash held by individuals or businesses, excluding bank, that has reached about 40.52 ट्रिलियन रुपीस. बैंक्स के पास तो बेचारे के पास कैश है ही नहीं, सारा आप ही लोगों ने रख रखा है, देख रहे हो, विच इज अराउंड 97.6% ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन. इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, और मेजर इंक्रीज यही हुआ है. बैंक के पास तो जो पैसा आता है वो हाथों हाथ चला जाता है आगे की इन्वेस्टमेंट्स में. अब सेवरल फैक्टर्स है विच हैज लेड टू दिस. सो पहला है प्रिकॉशनरी डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग. प्रिकॉशनरी डिमांड मतलब कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ पैसा हाथ में रखो, कल को कोई बैंक ना डूब जाए, बैंक का सर्वर ना चले, तो कुछ पैसा हाथ में रखो. हाउस होल्ड एंड फर्म दे प्रेफर टू होल्ड कैश. रिवाइवल ऑफ रूरल इकोनॉमी वेयर कैश इज द मेजर mode of transaction. Informal sectors are growing. Again, major form of transaction is cash. Seasonal and structural factors such as wedding seasons, kharif harvest income, tax reduction, especially GST, has also boosted the liquidity and demand. And ATM withdrawal trend has also sustained, which says that yes, cash usage is increasing. अगर मैं कहूँ with monthly withdrawal accepted to exceed the long-term average of 2.5 lakh crores. कि अब जो मंथली विड्रॉल्स हो रहे हैं एटीएम से वो 2.5 लाख करोड़ पर महीने से भी ज्यादा होने के चांसेस, जिसमें सम ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है जी, ये क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू गिव मी द आंसर. रीड द क्वेश्चन गाइस एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर क्विकली. आई वांट ईच वन ऑफ यू टू रिप्लाई. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना, फिर ही आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया दैट इज क्लियर टू यू. जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, then we will be moving ahead. Do it fast. Anybody can give me the answer. 4.4 lakh crore is the increase. 4.2 lakh crore is the increase with the public. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो ओवरऑल होल्डिंग जो कैश का फ्लो है ओवरऑल दैट इज 41.68, मतलब 41,68,000 करोड़ रुपीस. ऑलमोस्ट क्लोज टू द बजट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो. और जो इंक्रीज है वो है 4.5 लाख करोड़ रुपए का. दैट इज द इंक्रीज वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट. अरे भैया अब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? शैल आई मूव अहेड? कोई आंसर देगा क्या? Anybody who is going to give me the answer for this question? I'm waiting. I want everyone to try. ठीक है जी, तो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. If I come to the answer of this particular question, let's read out all the information. So the first point says what? Rising CIC alongside digital payments. It's because of the dual behavior of transaction and store of value. क्या ये इस वजह से है कि दो तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है इंडिया में? बिल्कुल सर, इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन भी हो रही है और उसके साथ साथ फिजिकल ट्रांजेक्शन भी हो रही है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है. अगली स्टेटमेंट क्या कहती है सर? अगली स्टेटमेंट कहती है डिक्लाइनिंग CIC टू GDP रेशियो इंडिकेट्स रिलेटिव फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. बिल्कुल, जो CIC की GDP से रेशियो है वो कम हो रही है, विच मीन्स यस, एक तरफ GDP बढ़ना, इकोनॉमी बड़ी होना, बट CIC कम होना मतलब कैश का फ्लो कम होना. प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर कैश इंक्रीजेस ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. ट्रू. हायर रूरल इनकम ऑटोमेटिकली लीड्स टू. नहीं सर, ऐसा नहीं है, रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन कैश. Seasonal factors like harvest income, wedding can influence the liquidity. That is correct. So answer is going to be A option. अब गाइज अगर आपको लगता है कि आप RBI Grade B एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करना चाहते हो, you need to practice 75 tests in next 75 days, then we have come up with a crash course where we will be giving you 75 days schedule where you will be attempting 75 tests. We will take live classes on ESI, finance as well as management to cover the syllabus. We will be giving you 2500 plus MCQs question bank. We will even give you 10 full length mock tests for phase 1 as well as phase 2. We'll provide you with 6 months doable, concise as well as I could say doable, concise, up to date compiled PDFs जिसको पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज्यादा. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्योंकि आज की डेट में 200 पेज की मैगजीन हर जगह अवेलेबल है फॉर अ मंथ.
अब प्रॉब्लम ये है कि 200 पेज की मैगजीन देना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। हर कोई कह देता है बाद में एग्जाम होने के बाद सारा पेपर हमारे नोट्स में से आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। जब आप स्टूडेंट को कहोगे 200 पेज पढ़ लो, पीआईबी के 200 पेज पढ़ लो, फाइनेंस के 200 पेज पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस के स्कीम अलग से पढ़ लेना, रिपोर्ट्स अलग से पढ़ लेना, तो भैया इतना तो कोई भी पढ़ जाए, सब ले लेंगे नंबर, लेकिन इतना पढ़ेगा कौन? सो इस सिचुएशन को देखते हुए वी आर क्रिएटिंग कंपाइल्ड डूएबल कंसाइज पीडीएफ। ऑब्वियसली इससे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व 100% जनरल अवेयरनेस, बट विल ट्राई दैट यू शुड रीच टू 40 to 50% ऑफ द एग्जामिनेशन लेवल, ताकि एग्जाम के आप जो 30-40% मार्क्स रिक्वायर्ड है 24 to 40 के बीच में, उतने मार्क्स जीए में आ जाए, जनरल अवेयरनेस अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर हो जाए, पूरा फेज 1 क्लियर हो जाए, फिर फेज 2 तो हम करा ही देंगे, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑफर भी है, यूज करना कोड RBI 26 बिना कोई स्पेस के। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2960 में अवेलेबल है। कोर्स के जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लेना। इससे बढ़िया कोर्स ना मिलेगा, ना मिल सकता है। लेना चाहो तो जरूर ले लो। प्राइस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक इट इज अफोर्डेबल, कीपिंग इन माइंड द मार्केट इन विच यू आर राइट नाउ। इस इतने कम प्राइस पे कोई कुछ ऑफर करता नहीं है। वी आर डूइंग इट जस्ट फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन डू प्रीटी वेल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा हो जाएगा। सर इज इट ट्रू फॉर डिजिटल पेमेंट कैश रिक्वायर्ड बिकॉज डिजिटल पेमेंट वैल्यू इज रियली एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, नहीं समझ आया सौरभ, प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। Yes, Rishabh, I'm planning to do that. Will inform you. Bye bye. Take care. Good luck. Don't forget to hit the like button before leaving. See you soon.